Assalamualaikum ji. Assalamualaikum everyone. We've got BabarAzam, Pakistan's captain, ahead of the third Pakistan-Australia Test match, जो कि लाहौर में कल से शुरू होगा. I believe we don't have any questions in English for now, तो उर्दू से हम start करते हैं. सोहेल इमरान पहला सवाल करें. अस्सलामुअलैकुम बाबर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2015 में आपका डेब्यू होता है यहाँ पे वाइट बॉल का. अब आप पहली मर्तबा टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने चाह रहे हो, होम क्राउड के सामने. आपने बड़ा अच्छा किया कराची में. कुछ क्या एक अलग से करना चाहेंगे अपने इस ग्राउंड पर? हर किसी का ख्वाब होता है अपने होम ग्राउंड पर खेलना. देखें, ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता. और होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेलना एक डिफरेंट फीलिंग होती है. और कोशिश यही होती है कि बेस्ट दिया जाए. जिस तरह हर मैच में बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह बेहतर करूँ. जी, अगले सवाल लेते हैं. अनस सईद कादिर ख्वाजा. अच्छा बाबर, बांग्लादेश में भी आपने जो वो बॉलिंग की थी और अभी भी जो टेस्ट मैच था पिंडी का उसमें भी आपने बॉलिंग की थी. तो नेक्स्ट सेशन में भी देखने में आ रहा है आप रेगुलरली जो है बॉलिंग कर रहे हैं आप. तो इसके पीछे क्या प्लान है फ्यूचर के लिहाज से? कोई ऑलराउंडर भी बनना है? देखें, ये थोड़ा सा इस सेंस में बॉलिंग की जाती है कि थोड़ा सा बैट्समैन को डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग मिलनी चाहिए. जो क्योंकि एक बैट्समैन एक बॉलिंग खेल के वो उसमें सेट हो जाता है एकदम. आप उस दूसरा कोई स्पिनर आता है या दूसरा कोई पार्टनर बॉलर आता है तो उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा फ्रीली खेलते हैं. तो उसमें मिस्टेक या विकेट लेने का अपॉर्चुनिटी होती है. तो उस सेंस में थोड़ी सी बॉलिंग की जाती है कि थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए. और बॉलिंग में पहले भी करता रहा हूँ नेट प्रैक्टिस में, और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतर किया जाए. और मैच में भी कोशिश करता हूँ कि जितनी करूँ उतनी बेहतर की जाए बॉलिंग. अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने खेला है और रिजवान भाई ने भी बड़ा अच्छा खेला है. गुज़िश्ता रोज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें हमने देखा कि रिजवान भाई भी जो है वो स्पिन बॉलिंग करवा रहे थे और हमारे जो फास्ट बॉलर है वो भी स्पिन की कोशिश करते हैं करने के लिए. तो ये बताएं कि रिजवान भाई को अगर मौका मिले, कोई स्पिनर नहीं चल रहा, कोई बॉलर नहीं चल रहा, तो रिजवान के पैड कर चेंज करवा के आप करवा सकते हैं. और दूसरा ये है कि अजहर अली जो है उनकी जगह शान मसूद को क्या इन किया जा सकता है? उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है. नहीं, मेरे ख्याल से वो तो रिजवान जब बॉलिंग करता है वो तो इस सेंस में कभी कभार फास्ट बॉलर भी बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन भी बॉलिंग इसलिए करते हैं कि दूसरों की हेल्प की जाए. हम कोशिश यही करते हैं कि जितनी हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को जितना भी हो सके प्रैक्टिस दें, उतना हमारी टीम के लिए अच्छा है. हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को ज़्यादा हेल्प की जाए. और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. पिछले मैच में जो तरह अजहर अली ने इनिंग्स खेली और पास में जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं तो वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं. उन्होंने काफ़ी सर्विसेज हैं उनकी और काफ़ी अच्छी फॉर्म में. तो एक मैच के बाद आप नहीं ये सोचते कि हम उनको बिठा दें या इनको बिठा दें. बेस्ट चल रहा है और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे. मोहम्मद याकूब, शाहिद हाशमी, रिजवान अली. जी बाबर, एक तो आपको मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी इनिंग खेली. और कितने कॉन्फिडेंस है आप तीसरे टेस्ट में कि ये सीरीज डिसाइड भी होगी और पाकिस्तान जीत भी जाएगा? कितना कॉन्फिडेंस है? और कोई चेंजेस हो सकती है कोई प्लेइंग 11 में? देखें, बिल्कुल जिस तरह लास्ट मैच हमने एज अ टीम खेला उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और इसी कॉन्फिडेंस को लेके हम कल के मैच खेलेंगे. डेफिनेटली हम तो यही इसीलिए खेल रहे हैं कि हम रिजल्ट लें और रिजल्ट के लिए ही खेलेंगे, मैच जीतने के लिए ही खेलेंगे. कोशिश हमारी यही होती है कि हम 100% दिया जाए. और देखें, चेंजेस अभी फिलहाल आज जाके फाइनल विकेट देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे. और फाइनल 11 जो भी है वो इंशाल्लाह कल आपको मैच पे पता लगेगी. जी शाहिद भाई, सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम बाबर, बहुत बहुत मुबारक, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स आपने खेली. ये बताइए कि अब अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतता है लाहौर में और सीरीज जीतता है तो ये कितना मायने रखेगी इस यंग टीम के लिए जो रिबिल्डिंग के प्रोसेस में है ऑस्ट्रेलिया को हराना?
डेफिनेटली बड़ी काफी मायने रखती है, और आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होम सीरीज में जीतेंगे तो काफी एज अ टीम और एज अ कंट्री हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा। और जिस तरह हमारी टीम डे बाय डे चीजें इम्प्रूव कर रही है और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो उससे हमें काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। और हमारा जो मोटिव और हमारा जो माइंडसेट यही है कि हमने मैच जीतना है, और कोशिश हमारी यही होगी, बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में। जी रिजवान अली। अस्सलाम बाबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको शानदार इनिंग पे। जज़ाकल्लाह जी। बाबर, क्या डिफरेंट आपको लग रहा है लाहौर का विकेट कि जब आईसीसी एकेडमी के क्यूरेटर ने आके इस विकेट को देखा है थोड़ा सा पिछले 5-6 दिनों में, तो कराची और रावलपिंडी से क्या डिफरेंट आपको इस विकेट में लग रहा है? देखें, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सेम सेम लग रही है मेरे ख्याल से। जो मैंने फील किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे टर्न लाजमी मिलेगा, क्योंकि इतने यहाँ पे खुले क्रैक्स नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स हैं, और छोटे छोटे क्रैक्स में मेरे ख्याल से स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और पैचेस भी बनते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी डिफरेंट विकेट खेलेगी कराची से। देखो अभी इतना तो हम नहीं बता सकते कि कैसे 100% वही बिहेव करे जो आप सोचते हैं। कभी कभार डिफरेंट भी चीज़ें भी, कंडीशंस भी डिफरेंट भी बिहेव करती हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं इंशाल्लाह। हमारा जो डिपार्टमेंट है स्पिनर का और फास्ट बॉलर का, उधर हम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, तो इंशाल्लाह फाइट करेंगे। असलान जट, बिलाल, अकील और वहीद। इमाम, पहले तो मुबारक हो, होम ग्राउंड में पहला टेस्ट खेलने जा रहे हैं। बाबर। दूसरा ये बताइए, ओ सॉरी, इमाम पे सवाल था इसलिए आप बाबर के इमाम। अच्छा इमाम ने पहले टेस्ट में जो है वो दोनों इनिंग्स में सेंचुरी भी की, लेकिन उसके बावजूद एक तनकीद उन पे लगातार हो रही है। तो एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह का कॉन्फिडेंस देखते हैं इमाम में उसके बावजूद? कैसे इसकी तनकीद लग रही है, भी थोड़ा बता दो। पहले दोनों टेस्ट में भी उनके स्लो जो है उस पे तनकीद होती रही, और जब सेकंड टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर उन्हें वो विकेट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उसको लेकर भी जो है काफी तनकीद होती रही है। सर देखें, तनकीद अच्छा भी करते हैं तब भी होती है, बुरा करते हैं तो वो तो वैसे ही होती है, वो तो हर टाइम चलती रहती है। उस पे हम इतना बॉदर नहीं करते। हमारे लिए जो बेस्ट होती है हम वही करते हैं, और नेगेटिव जो चीज़ें हैं हम वो टीम में आने नहीं देते। और जितना हम पॉजिटिव एक दूसरे को मैं जितना लड़कों को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रख सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और नेगेटिव जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं टीम से दूर ही रखता हूँ। और उनको भी बोलता हूँ कि जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरे ख्याल से स्लो रन रेट तो मुझे तो नहीं लगता। आप ऑस्ट्रेलिया की भी देख लें, वो भी पिछला मैच हुआ है 2.9 के रन रेट से खेली है थ्रू आउट, और उस पे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, बॉलिंग क्या हो रही है, और दूसरी टीम कैसे आपको बॉलिंग और फील्डिंग पोजीशन से आपसे खेल रही है। तो उसमें आप ये नहीं कि आप रिस्क लेके आउट हो गए आ जाएं। उसमें कभी कभार आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कभी कभार रन्स नहीं मिलते, उसमें आपका पेशेंस टेस्ट होता है। तो जितना आप अपने आप को काम और कूल रखेंगे, एक सेशन ऐसा भी आता है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा रन्स मिलते हैं, कभी कभार आपको ऐसा सेशन मिलता है जिसमें आपको रन्स ही नहीं मिलते। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस चाहिए होता है, और जितना थ्रू आउट ओपनर्स ने हमारे पेशेंस दिखाए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। सवाल करें बिलाल। बिलाल की आवाज आ रही है आपको? बिलाल आपकी हमें आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट वही पे चलते हैं। वही साहब जी जी, बाबर आजम सबसे पहले जी करें वही। जी, बाबर आजम सबसे पहले तो आपका जो पिछला जो सीजन था कमाल का रहा, अभी आगाज है बहुत अच्छा हो चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह पाक मजीद इज्जत दे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले जो आखिरी 5 सेशन होंगे, ये कहा जा रहा है जो स्पिनर है वो डोमिनेट कर सकता है, तो टास्क कितना अहमियत का अमल होगा? देखिए, टास्क तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जो भी ऑन द डे जिसका जो जीतेगा वो तो डेफिनेटली उसको एज होता है, लेकिन हम हर चीज के लिए प्रिपेयर हैं। आखिरी दिन हमने यहाँ पे भी खेल के दिखा दिया है कि बिल्कुल हम डोमिनेट कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं, जिस तरह हमारे थ्रू आउट बैट्समैनों ने फाइट दिखाई है, और टेल ने भी जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, साजिद ने, नुमान ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पहले बैटिंग हो या बॉलिंग हो, हमारा यही होता है कि हम
100% दे और डोमिनेट करें। जी शहजाद मलिक, अब्बास रजा और फिर एजाज बाकरी। बाबर, एक पंजाबी की कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे वो जमया नहीं, और लाहौर में 13 साल बाद जो है वो टेस्ट होने जा रहा है और पूरी की पूरी टीम जो है पहली मर्तबा लाहौर में टेस्ट खेल रही है। क्या होप्स लेके पूरी टीम जा रही है और रिजल्ट ओरिएंटेड देख रहे हैं इसको? जी डेफिनेटली रिजल्ट हम भी एज अ टीम रिजल्ट देख रहे हैं और बिल्कुल काफी एक्साइटेड है पूरी टीम के पहली बार 13 साल बाद हम मैच खेल रहे हैं। मेरा तो पहला मैच है तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। अब्बास रजा। जी बाबर, आपने कहा कि टास्क की जो है वो उससे ज्यादा बेहतर खेलना जो है वो अहमियत का अमल है, लेकिन अगर इस कंडीशंस को देखा जाए, ये जो गद्दाफी स्टेडियम की पिच है इसको देखा जाए, तो पहले बैटिंग करने वाली टीम एडवांटेज में रहेगी या बाद में? डेफिनेटली पहली बैटिंग जो कर रही है उसको थोड़ा सा एज मिलता है क्योंकि लेटर ऑन थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिलते हैं, पैचेस बनते हैं तो उस पर ज्यादा स्पिनर को हेल्प मिलती है। डेफिनेटली जो पहले बैटिंग करता है उसको एज मिलता है। और यहाँ पे थोड़ी सी वेदर का भी थोड़ा सा है, थोड़ा हीट है तो मेरे ख्याल से विकेट का बिहेव डे बाय डे चेंज होता रहेगा, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम प्रिपेयर हैं और देखें इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू। एजाज बाकरी। थैंक यू। बाबर, मेरा आपसे सवाल ये था कि पाकिस्तान जब यूएई में खेल के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराता था तब भी एक बहाना होता था विकेटों का। अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि कराची और पिंडी का विकेट क्या इतने बुरे थे कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्ट्रगल की, या पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी तो इसलिए वो पिचेस के पीछे बहाना तलाश किया जा रहा है कि जी पिचेस बुरी थी तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं खेल सका? आपका क्या तज्जिया है? ये उल्टा भी कह सकते थे आप, ये आप उल्टा भी कह सकते थे। हमेशा आपने पाकिस्तान को ये कहना है कि वो स्ट्रगल की है, या वो ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान अच्छा खेला है, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को थोड़ा सा टफ टाइम दी है, तो ये कहना अगर ज्यादा ये कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, कंडीशंस हर दोनों टीमों के लिए सेम होती है, दोनों टीमों के लिए सेम कंडीशंस थी और सेम पिच थी। और जिस तरह लास्ट मैच हमने बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, बिल्कुल तो हमने उनके 10 आउट किया और इसमें भी उन्होंने भी हमारी पहली इनिंग्स में हमें आउट किया, लेकिन उसके बाद जो सेकंड इनिंग्स है उसमें हमने डोमिनेट किया, सारे बैट्समैनों ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और एंड तक हम मैच लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हमने बैटिंग की। लास्ट 2 क्वेश्चंस, उस्मान खान और वकास जफर। अच्छा बाबर, क्वेश्चन ये था कि स्पिनर्स का किरदार हम उस्मान आपकी आवाज चली गई है, स्पिनर्स के किरदार पे मैं बात कर लेता हूँ बाबर से। जी स्पिनर्स के किरदार बताएं। आप काफी देखते हैं। उनका सवाल था, ये आवाज नहीं आ रही। दूसरा विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने इस दफा टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं है, था टेस्ट सीरीज वकास सवाल करें। वकास जफर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पहले तो आपको मुबारक हो, आप बहुत अच्छा। मैंने आपसे ये पूछना था कि मिचेल स्टार्क को हमने देखा है कि वो काफी ज्यादा राउंड द विकेट बॉलिंग करता रहा है और वो राउंड द विकेट से भी बिल्कुल जिसे कहते हैं वाइड ऑन द क्रीज आता रहा है और उसी एंगल से बॉल जो है वो बाहर भी निकालता रहा, वहां से स्विंग करता रहा। तो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस की थी, कोई ड्रिल्स वगैरह की थी, उसके बारे में थोड़ा बता दें प्लीज। देखें आपको एशिया यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली रिवर्स स्विंग मिलता ही मिलता है, तो उसके लिए आप सीरीज से पहले प्रिपेयर होते हैं और उसके लिए हमने टेप बॉल से प्रैक्टिस की थी रिवर्स स्विंग की। मतलब एक तरफ से टेप करके दूसरी तरफ से टेप उतार के, तो वो थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मिलता है और उससे काफी मिलता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस किया। राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म को या स्टिक के साथ हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, उसके लिए पहले प्रिपेयर हुए थे क्योंकि हमें पता है कि अगर उसको ओवर द विकेट अगर स्विंग नहीं मिला तो वो राउंड द विकेट आके रिवर्स स्विंग के साथ वो बाहर
बॉल को निकाले और उसको वहाँ पे उसको हेल्प भी मिलती है, तो उसके लिए हम पहले प्रिपेयर हुए हैं, उसके लिए काफी ड्रिल्स किए हैं हमने। बिलाल अकील, अगर आपका माइक ठीक है तो प्लीज सवाल कर लें, लास्ट क्वेश्चन हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि फवाद आलम जिस तरह से अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि लाहौर? मैं आंसर कर ही देता हूँ। एक्सपेक्टेशन से देखें जिस तरह उनसे पहले थी, अब भी वही है। जैसे पास में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में इतनी परफॉर्मेंस दी है, उनको पता है कि कमबैक कैसे करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं मुश्किल कंडीशंस में और मुश्किल टाइम पे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उनको इन चीज़ का काफ़ी अच्छे से पता है। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ और पूरा कॉन्फिडेंट है मुझे उन पे कि वो इंशाल्लाह अच्छे इनिंग्स खेलेंगे लाहौर में। थैंक यू वेरी मच बाबर, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। Okay, we're ready to go. First question, Tom Decent, please. Hey Pat, just wondering if you guys have settled on an 11 yet? Yeah, we have. Same 11 as last match. Can you just elaborate on the thinking there and just talk a bit about how the guys have pulled up since what was a pretty laborious last test? Yeah, we were really happy with how all 11 players went last test. I think the wicket here looks quite similar to the previous two tests. So, yeah, everyone's pulled up really well. Yeah, we gave it an extra couple of days to make sure everyone's come up good, but there's no injury worries. Everyone's fresh. Everyone's freshened up. So, yeah, confident with the 11. Mel Farrell, please. Hello, Mel. Sorry about that. Hey, Pat, just you say you think the pitch, do you think it just sort of looks similar to how it played in the last test? Or what else do you know about this pitch and the expectations of what it's going to be like? Another tough one for the bowlers? Yeah, it looks quite similar. Yeah, it's not a lot of grass on it. I think it's had quite a lot of traffic throughout the PSL on it as well. It seems hard, but yeah, I can't see it being too much different from the other ones. So yeah, we feel like we've got all bases covered if needed for reverse swing or spin later in the game. And just if I can ask one more, bearing in mind that now we are at the decider, and you've been in some good positions certainly in the last test, is how do you approach it differently? Just a matter of taking the chances, or are you going to look at some different tactics, particularly I guess in how you use your bowlers? No, I think what's been clear, especially this week, was I think the way we've gone about it is the right way. I've been really happy with how everyone's gone about their own work, the tactics. I think it's just a matter of taking those chances. I think wickets are at a premium in this series, so you can't afford to drop too many chances. We created more than 10 chances. We just unfortunately didn't take it. So that's going to be the challenge this week. But I think nothing changes the way we've gone about it. It's proven that I think it's the right method. Channel 7 Sydney, please. Pat, Andrew McKinlay, just a supplementary one then to Mel's. Does that mean that you've got the same 11, basically the same bowling plan, and it's just a case of execution to complete a 1-0 series victory? Yeah, essentially. Yeah. Was there any sort of urge, particularly seeing he was your golfing partner, to play Hazelwood? Yeah, I think only having two quick bowlers,
I think reverse swing's going to be the biggest factor, and I thought the way Starkey played last game was fantastic. 3 wickets in the first inning, so it's always tough leaving out someone like Joshy, even Scotty Boland on the bench. But I think the class and the difference that Starkey brings as a left armer, a bit more airspeed, we think probably gives us the best chance of taking 20 wickets. Thank you. Andrew McGlashan, please. Thanks, Brian. Hey, Pat. I appreciate there's a lot to play out in terms of how the test match goes over the first 3 or 4 days, but with the series to win, would you be willing to gamble a defeat of it? I'm not talking about anything really out of this world, but to sort of risk a loss to get a win? It's kind of hard to judge without knowing the scenario, but I think you never think of playing it super safely if there's a win on the line. I think in reality, a lot of the time over here, the wickets probably don't provide the same rate of play, or pace of play, or maybe the same opportunities around in other places of the world. So it's kind of hard to compare apples and oranges when it comes to some tactics going for the win, but absolutely. Thanks, Pat. Bharat, please. Thanks, Brian. Morning, Pat. Just you spoke about your first impressions of that pitch and how it looked similar to the last ones, but the side wickets seem to have more bounce than what we saw in Karachi. Are you expecting it all, or maybe a little better carry than the last one? I don't know about that. I don't think can read too much in the side wickets. In Rawalpindi, the side wickets had a lot of pace and bounce and grass, and wasn't very similar to the middle wicket. And sorry, just one more. You spoke about Josh, but he's bowled a long spell yesterday, and he was really getting the ball to go. Did you ever come close to maybe bringing in 3 seamers at all, or you were pretty sure that you needed 2 spinners? Yeah, I think we needed 2 spinners. Of course, bounced a few different options around, but we thought, this is our best 11. I think it was good enough last week. We just didn't quite get over the line, but it's always a pretty lucky situation to be in, leaving someone of Josh's class on the bench. Thank you. Andrew Ramsey, please. Thanks, Brian. Hi, Pat. Both you and Andrew McDonald have spoken sort of throughout this tour of this being like a 15-day match almost. I'm just wondering what that sort of means and what it looks like. Does that mean you just have to be conscious of not letting it get away from you at any stage and hoping that eventually the sort of efforts pay off, or is there something that I'm missing in that conversation? Yeah, I think when we speak about a 15-day, test match, it's short turnarounds, 3 days last test, 4 days this test, and there's a lot of draws over here in Pakistan. So we're used to playing in Australia, other parts of the world where there's always results more often than not. Whereas here, opportunities might not present themselves every day. It's about holding on. We had a small opportunity, a good opportunity last game. Didn't quite get it, so it goes to this last game. But I think it's a matter of holding on until a couple of those opportunities throughout those 15 days spruik up. Mel Farrell, please. Thanks. Just with the 2 sort of frontline seamers in there, just wondering if you can talk a little bit about Cameron Green and the sort of way he's been managed and used throughout this series as the least experienced bowler as well. Just have you seen him learn particular things throughout this, and do you see him maybe having to perhaps take an even bigger role, perhaps, and bigger responsibility in this final crucial test? Yeah, I've seen him grown as a bowler. As a player in general, he's never experienced pitches like this before. He's never really bowled with reverse swing before. So for him to be able to develop quickly on the bigger stage
has been exciting to watch. I think there's certain moments within, I guess, the 80 overs of a ball where pace bowlers aren't going to be as effective, and there's other times when the ball's reverse swinging where you've got a real role to play. So, yeah, I think if he's on, it's for a real purpose. It's to have impact with a reverse swinging ball, or perhaps to, use his pace and bounce for some short bowling to try and create something. But I think over here, if it's just bowling for the sake of it, I think we've got some great spinner options that will mean that we can keep Greeny fresher for the other times. We've got time now for 4 more questions. Mohammed Yusuf, first of all, please. Back to Lahore, weather is going hotter and hotter. Can this affect your performance? I mean, we're used to playing hot weather. It's certainly, it is hot here, probably the hottest of the 3 venues. I guess the good thing here is all time as fast bowlers, we will. All the players are super fit. It's a big match, so it's hot, but it's nothing we haven't experienced before. Azam Ahmed, please. You practiced last day at Gaddafi. How do you take the pitch different from the other pitches, and what is your strategy coming into the final match? You also want to have a result and want to win the series. So any different strategy coming into the next final match of the Test series? Pitch, as I said, nothing too obvious there. In terms of change of strategy, I think we'll see how the match plays out. I don't think we need to change too much. Usman Khan, please. Bet you are the world #1 test bowler right now, and seems like you and some other Australian quicks are struggling and trying too much with the ball. Don't you think that Pakistani batsmen brilliantly all of your bowlers, or you think that your bowlers tried too much with the ball? I wouldn't say we've tried too much. Not at all. I think the Pakistani batters have batted quite well. I've been really happy with how all our bowlers have been going. Waheed, please. Waheed, please. First of all, very warm welcome to Lahore. Sorry, we can't hear what you're saying. You're going to have to send it on the chat facility, please. Ijaz, please. My question is that are you planning any changes? Sorry, we can't hear you. Use the chat facility, please. Ijaz Wazeem, please. Skipper, my question is, a few months ago, Australia beat England 4-0, and now Pakistan, you played 2 test matches, and Australia could not win so far 1 match. So is it Pakistani resilience is the big factor, or dead pitches is the big factor? I'd say it's a bit of both. It's very different cricket here to play in Australia. A lot of those matches in Australia were over in kind of 3 days. There was lots of wicket-taking opportunities. It's played at a different pace over here in Pakistan. So, I wouldn't compare the two too closely. Last question now, please. Anas Saeed. Skipper, any special plan for BabarAzam? No, I thought he batted well. We'll have a bit of a look and a review of different things we can try, but he played an outstanding inning. So, it's like a lot of the best players in the world. There's
they've seen a lot of the plans before, so it's just about trying to be really good for really long. Thank you very much, everyone. Take care.